अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल दैट द रिसर्चर manipulates or changes to observe its effect on another variable. This is the variable that the researcher manipulates or changes to observe its effect on another variable. This is the variable that the researcher manipulates or changes to observe its effect on another variable. This is the variable that the researcher manipulated or changed it to observe its effect on another variable. This is the variable that the researcher manipulates or changed it to observe its effect on another variable. This is the variable that the researcher manipulates or changes to observe its effect on another variable. तो तबीयत खराब है मेरी। कैफीन एग्जाम्पल में कैफीन कम है ज़्यादा है, उसका अमाउंट कितना है। इन अ स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन कोग्निटिव परफॉर्मेंस। ये सिर्फ ज़्यादा हो कम लो, वो अगर अच्छी नींद लोगे तो ये होगा, कम होगे तो ये, तो आपकी थिंकिंग परफॉर्मेंस होगी। डिपेंडेंट ट्रेंड एक एग्जांपल है। इन अ स्टडी, एग्जांपल बहुत सारी हो सकती हैं। तो इन अ स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन कोग्निटिव performance. In a study on the effect of sleep on cognitive performance. In a study on the effect of sleep on cognitive performance. In a study on the effect of sleep on cognitive performance. In a study on the effect of sleep on cognitive performance. In a study on the effect of sleep on cognitive performance. A dependent variable. This is the variable that is measured to see if the independent variable has an effect. Dependent variable. This is the variable that is measured to see if the independent variable has an effect. This is the variable that is measured to see if the independent variable has an effect. This is the variable that is measured to see if the independent effect. This is the variable that is measured to see if the independent variable has an effect. This is the variable that is measured to see if the independent variable has an effect. Caffeine, the dependent variable, would be score on a memory test. In caffeine, the dependent variable would be score on a memory test. In caffeine, the dependent variable would be score on a memory test. In caffeine, the dependent variable would be scored on a memory test. In caffeine, the dependent variable would be scored on a memory test. In caffeine, the dependent variable would be scored on a memory test. In caffeine, the dependent variable would be scored on a memory test. The dependent variable, caffeine, the dependent variable would be scored on a memory test. Control variable are constant throughout the environment to the member due to the environment by testing all participants in the same environment at the same time objective to minimize extraneous variable. Constant testing all participant example है ये testing all participant in the same environment at the same time objective to
to minimize extraneous variable. This variable are kept constant. Example: testing all participants in the same environment or at the same time operate to minimize extraneous variable. Are kept constant. Example: testing all participants in the same environment or at the same time operate to minimize extraneous variable. This variable are constant testing all participants at the same environment at the same time operate to minimize extraneous variable. आपके constant testing or participant at the same in the same environment at the same time operate to minimize extraneous variable. और क्या constant में आता है testing all participants in the same environment at the same time operate to minimize extraneous variable. The constant example testing all participants in the same environment at the same time operate to minimize extraneous variable. Extraneous variable extraneous EXTRA यानी एक्स यानी कि बाहर से आया हुआ NEOUS. These variables could potentially influence the dependent variable. 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 These variables could potentially influence this variable could potentially influence the dependent variable, but are not the controlled by researcher. But are not the controlled by researcher. But are not controlled by the researcher. But are not controlled by researcher. But are not controlled by researcher. But controlled by researcher. Example: these variables could potentially influence the dependent variable. Are not controlled by researcher. Example: individual differences in participants like their prior experience with the task or the level of fatigue. अब क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पे इन्फ्लुएंस कर सकता है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कि एक इंडिविजुअल है वो के डिफरेंस किस में आ रहा है पार्टिसिपेंट में आ रहा है ये उनकी एक्सपीरियंस में आ रहा है उनके टास्क के साथ और उनका लेवल ऑफ फटीग कितना है तो वो जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस करेगा एक्सट्रानियस वेरिएबल तो एक्सट्रानियस वेरिएबल में है कि तमाम कंपाउंडिंग वेरिएबल्स तो एक्सटर्नल होते हैं लेकिन तमाम एक्सटर्नल कंपाउंडिंग नहीं होते individual individual differences in participant like example is कि individual differences in participant individual different participant individual different participant individual different participants like the prior experience 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 with the task or the footing with the task or the footing with the task or the footing with the task with the task or footing individual differences different like the prior experience with the type of footing could potentially influence the dependent people but I'm not the example is individual differences but hence like the prior experience the task or level fatigue. Mediating variable और confounding variable. Mediating confounding हमने बात की इससे पहले कि एक्सट्रानिस वेरिएबल की एक्सट्रानिस वेरिएबल में हम देखते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है यानी जो रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट सही है नहीं है कैसा है ये एक्सट्रानिस वेरिएबल है इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दे सकता हूँ जैसे मैंने कहा कि तमाम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स एक्स्ट्रा लेकिन तमाम एक्सटर्नल वेरिएबल कंफाउंड नहीं होते जैसे कि अगर
हम बोलेंगे भाई आप जो है वो एक पानी है और पानी में आप टैंक डाल दो। ये 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 हो गया। ये कब टैंक में पानी नहीं डाल सकते तो ये इस तरीके से है। एग्जाम्पल लिखी है, एक्सटेंडेबल इज एनी आउटसाइड फैक्टर, कोई भी बाहर से आने वाला हो सकता है। जैसे कि हो ना, एक्सटर्नल होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, बाहर वाले आते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करता है इंडिपेंडेंट जो रिजल्ट आया। अब आपने प्रैक्टिकल कर लिया प्रैक्टिकल लिख लिया। जब प्रैक्टिकल लिख लिया तो फिर वो एक्सटर्नल आएंगे, आपसे पूछेंगे कि इसका आपने जो रिजल्ट आया है, आपने जो डायग्राम बनाई है, इसका जो आपने रिजल्ट लिखा है वो किस से, तो वो आपने काम कर लिया। फिर देखो ना, जब आप लिख रहे होते हो तब नहीं होता, जब आप अपना प्रैक्टिकल लिख चुके होते तो एंड में वाइवा होता है, वो आपका जो रिजल्ट होता है उसके ऊपर होता है। ऐसे ही जब आपका किसी पेपर का रिजल्ट आता है तो सब पूछते हैं कि भाई क्या रिजल्ट आया, क्या लोग पूछते हैं, आपकी फैमिली पूछती है। तो जब आप पेपर दे रहे हो तो उससे उससे पहले नहीं पूछते हैं कि आप अभी क्या हो, क्या नाम है, इंडिपेंडेंट हो। जब आपका रिजल्ट आता है तो लोग पूछते हैं, तो ये एक्सटर्नल वेरिएबल मान सकता है। तो हम बात करते हैं मेडिएटिंग वेरिएबल की। दिस वेरिएबल्स आर इन द causal chain between the independent and dependent. These variables are in the causal chain between the independent and dependent. These variables are in the causal chain between the independent and dependent. These variables are in the causal chain between independent and dependent. These variables are in the causal chain between independent and independent. They help explain how the independent affects the dependent variable। मतलब कैसे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स करता है डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो ना, अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की वजह से, अगर जो भी इंडिपेंडेंट के होते हैं असरात वो डिपेंडेंट पे होते हैं, और डिपेंडेंट के चेंज से इंडिपेंडेंट भी होता है चेंज, इस मामले में ये यानी डिपेंडेंट क्या नाम है, इंडिपेंडेंट पर इन्फ्लुएंस करता है। सही है। They help explain how the environment affect the dependable. They help explain how the environment affect the dependable. They help explain how the well, they help explain how the they help explain how the dependable affect the people. They help explain how the and casual chain affect the a variable। एग्जाम्पल लेते हैं मेरी रेटिंग की। इफ़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेस, स्ट्रेस आपको इंडिपेंडेंट है, वो ज़्यादा कम होती रहती है। वेल आपका ब्लड प्रेशर है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो। मैंने वेल आपका जो होगा वो स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज कर देगा। एग्जाम्पल याद होना चाहिए। इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल stress, if the independent plus stress, if the stress, if the and dependent blood pressure and dependent blood pressure and dependent blood pressure and dependent blood pressure. A rating variable might be the release of hormone. A rating variable might be the release of hormones. A rating variable might be the release of hormones. A rating variable might be hormones. A rating variable hormones. A rating variable might be the hormones. If the independent variable is stress and blood pressure, rating variable might be the hormones। ये तो मेटिंग एक ब्रिज है
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान। ठीक है। और अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट स्ट्रेस आ गया, डिपेंडेंट ब्लड प्रेशर आ गया। अब बीच में से निकला स्ट्रेस के हार्मोन के। इंडिपेंडेंट को अगर देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैसे अफेक्ट करता है डिपेंडेंट पे। तो अब इंडिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट ने डिपेंडेंट किया, ये तो स्ट्रेस की वजह से बढ़ गया ब्लड प्रेशर। तो क्या हुआ, स्ट्रेस हार्मोन निकले। स्ट्रेस हार्मोन, हमने कहा कि इंडिपेंडेंट के स्ट्रेस है, इंडिपेंडेंट अफेक्ट करेगा डिपेंडेंट पे। तो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस अफेक्ट कर रहा है ब्लड प्रेशर पे। लेकिन फिर हार्मोन्स निकल आए, एक बीच में से हार्मोन्स निकले जो कि ब्लड प्रेशर के लिए थे। स्ट्रेस स्ट्रेस खत्म होगा तो रुक जाएगा, तो वो हार्मोन स्ट्रेस के लिए थे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए खत्म करने के लिए, तो ये है कॉमन सेंस। दिस इज कंफाउंडिंग। पहले अच्छा, पहले हम कंफाउंडिंग पर पहले मॉडरेटिंग पे आ जाते हैं। मॉडरेटिंग लिखा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ और व्हाई ऑफ इधर पढ़ लेते हैं। मॉडरेटिंग वेरिएबल, meeting variable explain the how or why ताल्लुकात between independent variable, यानी कि इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट के दरमियान के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं, क्यों है। जैसे कि मियाँ और बीवी हैं, उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह के हैं, कि क्यों ताल्लुकात ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं। ये तो मैटिंग वेरिएबल है, ये बताया जा रहा है। ये मैटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन द हाउ और व्हाई ऑफ आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। Moderating variable explain when or for whom either taluka but influencing the strength or direction of the independent dependent link. Strength and direction of the independent dependent link. Strength and direction of the independent link. Strength and direction of the independent link. Strength and direction of the independent links. Strength and direction of the independent links. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। ये कंट्रोल, हमने कंट्रोल पढ़ा ना, कंट्रोल में क्या कर सकते हैं अगर इंडिपेंडेंटली बात करें कंट्रोल। लेकिन इसको मैं एंड में डिस्कस करूंगा, पहले मैं जो हूँ वो एग्जांपल एंड में अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। हम पहले करते कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है। These variables are added to both the independent, making it difficult to determine if the independent variable truly causing the change in independent variable. कंफाउंडिंग एक थर्ड फैक्टर है जो कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में मुश्किल पैदा करता है उनको कंफ्यूज करने के लिए। दिस वेरिएबल आर टू बोथ इंडिपेंडेंट These variables are active to both independent and dependent. These variables are active to both independent and dependent. These variables are active to both independent and dependent. These variables are active to both matter. These variables are active to both matter, making it difficult to determine, 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 making it difficult to determine if the if the causing the
If the independent variable is to the causing independent variable, if the independent variable is causing the independent variable, if the dependent variable is to the causing the independent variable. These variables, these variables related to both the independent variable, making it difficult to determine if the independent variable is the independent variable. Example है, in a study examining the effect of stress on mood, confounding variable may be studied as the effect of more energy linked to stress habits.